Good morning, dear students. How are you all? Welcome back to my channel, The Achievers Education. Today, we are going to discuss about the topic called as Pune Pact and how it was a very important decision which was made by Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. As a result, we really, in real sense, got independence because of this particular pact. Also, we can say, right? Uh, Now let's move forward. What was Pune Pact? So, Dr. B.R. Ambedkar, you know it very well. Dr. B.R. Ambedkar, who organized Dalits into a depressed classes association and demanded separate electorates for Dalits. So Dr. B.R. Ambedkar was the one, he was actually a kind of masiha for so many depressed class people, okay, the Dalit people who were the downtrodden classes, okay. He was the one who represented them. So what did he do? He organized a Dalits into a depressed class association and demanded separate electorates for Dalits. Okay, उन्होंने क्या करा कि जो ये डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके लिए भी उन्होंने जो पार्लियामेंट में है, जैसे प्रोविंशियल काउंसिल हुआ या फिर सेंट्रल काउंसिल हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने जो है उनके लिए एक सेपरेट रिजर्व सीट्स की डिमांड करी ताकि वो लोग भी इलेक्शन का भाग बन सके और उनका भी रिप्रेजेंटेशन आ सके. So when the British government accepted the when the British government accepted Ambedkar's demand, then Gandhiji started its fast unto death. Okay, क्योंकि वो टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, ऐसा नहीं था कि वो निकल चुकी थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि चलो ये ठीक है, हम लोग देंगे ना इसके बारे में. Okay, but then when Gandhiji heard about this thing, he started his fast unto that. Okay, वो एकदम धरने पे चले गए. Then what happened? Because Gandhiji believed that by giving separate electorate to Dalits, then it would disintegrate the unity of the society. उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग ने किसी को separate electorate दे दिया तो उससे क्या होगा, जो unity जो है हमारी देश की वो खंडित हो जाएगी. Okay, and the same was the question with the Muslims as well. Okay, they also Gandhiji did not give a separate electorate to Muslims also at that time because they did not wanted to remove the unity of the country. Understood? So that was the intention of Mahatma Gandhi at that time. Now move forward. Dr. B.R. Ambedkar accepted Gandhiji's demand and the result was Pune Pact. फिर उन्होंने एक पैक्ट साइन किया कि कुछ उसमें कुछ अलग अलग बहुत सारे provisions थे that we will be discussing in the coming days also. So as the result was what? The Pune Pact was the result in September 1932. उसमें साइन किया गया. Then Pune Pact gave the depressed class reserved seats in the provincial and legislative council, but they were to be voted by the general electorates. Definitely by signing the Pune Pact, the reserved and the Dalit class definitely got the reserved seats. उनको अलग अलग reserved seats मिली थी, मगर जो इन सीट्स के ऊपर जो वोट करने वाले जो लोग थे वो जनरल रहेंगे, ऐसा उन्होंने कंडीशन देके उन्होंने ये कहा था. ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए हमने जो रिजर्व सीट रखी है तो उसके ऊपर वोट करने वाले सिर्फ आप ही के कास्ट के रहेंगे, ऐसा नहीं था. एवरीबडी, आपको जो चुन के जो आना है वो आपको सभी के मत से ही चुन के आना है. ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि आपको से आपके पर्टिकुलर क्लास को सिर्फ पर्टिकुलर क्लास ही वोट कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा. यू विल बी बीइंग वोटेड बाय एवरीबडी. ओके, so that's what it was said that you were to be voted by general electorates. Understood? Then आपको एक और चीज देखना है. गांधी जी यूज टू कॉल दलित्स हरिजन. ओके, हरिजन का मतलब क्या है? चिल्ड्रंस ऑफ गॉड. ओके, हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है बच्चे या फिर लोग. ओके, सो ही यूज टू कॉल अदर्स, ही यूज टू कॉल दलित्स एज चिल्ड्रंस ऑफ गॉड because he did not do any kind of discrimination with them, but it was the fact that that time situations were like that Gandhiji had to he had to go against this Pune Pact. But ultimately with some mutual agreements they agreed to it, and then it was put on forward. Now you can see the Pune Pact gallery which is there. You can see some pictures also of the Pune Pact, all right, and you can see it very well. Now let's move forward. Now we also need to understand what were those factors which brought sense of collective belongingness. ऐसे क्या चीजें हुई थी जिसके कारण there was lot of nationalism developed. ऐसे कौन से चीज हुए थे जिसके कारण लोगों में देशभक्ति का जो नारा था ये बहुत उमड़ पड़ा था. Let us see. There may a question arise, okay, in the exam also, that list the factors which brought sense of collective belongingness among the people. So ये question definitely आ सकता है, तो हमको इस चीज को पढ़ना है 5 points में. So let us see. The very first factor was united struggle. Okay, everybody who were there in India, they always used to come and fight unitedly. ये लोग जो भी फाइट करने के लिए आते थे as a struggle, as a protest,
they used to come and fight always united, okay. They used to come unitedly, and they used to do things together, because when people came together, the movement was successful and it created the feeling of nationalism. So ये एक पहला factor था. Secondly, history of country, fiction stories, prints, symbols, songs, folklores played a very vital role in increasing the nationalism, okay. हमारा जो इतिहास था, हमारे जो कहानियां थी, महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, द जातक टेल्स, प्रिंट्स, सिंबल्स, सॉन्ग्स, गाने, देशभक्ति के गाने, ये सारी चीजों ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा देशभक्ति को इम्प्रूव करने के लिए और देशभक्ति लोगों तक ज्यादा तक बढ़ाने के लिए, ओके. क्योंकि जब हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री, कितनी अच्छी हिस्ट्री रही है, कितनी प्राउड हिस्ट्री रही है हमारी, ओके. वी वर वेरी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री की इतने सारे जबरदस्त फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे कंट्री में, हु हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्ट्रगल. तो जब लोग ये हिस्ट्री सुनते थे, दे यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड बाय listening to all of this history, listening to the songs, looking at the symbols, okay, looking at the prints. ये लोगों इन सब चीजों को देख के उन्हें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता था. And third thing, people also saw India's identity as Bharat Mata, which was made by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870, and he wrote Vande Mataram. ओके, लोगों को एक आइडल चाहिए था. जैसे कि हमने फ्रांस में देखा था कि जर्मन लोगों ने जर्मानिया बोल के एक फीमेल फिगर की तैयारी की थी, और फ्रांस के पीपल ने मराइने बोल के एक फीमेल फिगर तैयार किया था. वैसे ही हमारे यहाँ पे भारत माता को भी तैयार किया गया था. ओके, वी हैड दैट फीमेल फिगर was nothing but the भारत माता, okay. And people used to idealize, हमको लड़ना है तो हमारे भारत माता के लिए लड़ना है, okay. That's what the kind of idea which was developed. And who developed it? It was developed by Bankim Chandra Chattopadhyay, who also wrote Vande Mataram, okay. So ये जो एक song जो था, जो काफी लोगों में बहुत प्रचारित चला और बहुत लोगों ने इसे सराहा और काफी सपोर्ट करा था, okay, which has now become our national song also. And national anthem is nothing but the Jana Gana Mana. So that's what I was just saying, that unity in diversity we always had, right? So, and there are some more points also. Nationalism also was grown by revising the folklores, okay. हमारे जितने भी folklore का मतलब क्या होता है, जितने भी traditions होते हैं हमारे country के अंदर, okay, कोई भी particular society का जो tradition होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, folklore. So नेशनलिज्म वाज आल्सो ग्रोइंग बाय रिवाइजिंग द फोकलोर्स, ओके. हम लोग हमारे ट्रेडिशंस के बारे में पहले देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, उनको प्रैक्टिस करते थे. एज अ रिजल्ट वो और डेवलप होते गया, हर दिन डेवलप होना शुरू हो गया था. सो द पीपल गॉट मोटिवेटेड बाय गोइंग बैक, बाय रिवाइजिंग देयर फोकलोर्स आल्सो. Next thing, so in late 90s, several Deshbhakti songs were also composed and were shared with the people to bring sense of collective belongingness, okay. So ये जो चीजें थी, ये लोग जो देशभक्ति के गाने गाते थे, as a result, lot of people used to get motivated due to these songs, okay, and the nationalism grew like anything. And the last point which is there, reinterpretation of history was done by people which made others feel motivated when they used to hear the proud freedom struggle done by the freedom fighters, and this created feeling of nationalism. So ये सारी चीजें भी होती गई जब हम लोग हमारी हिस्ट्री पढ़ते थे, हमारा जो हिस्ट्री पढ़ते थे, हमारा प्राउड हिस्ट्री पढ़ते थे, कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए अपनी जान तक के जोखिम में डाली थी, एंड हाउ पीपल गॉट मोटिवेटेड आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो ये सारी चीजें थी जो हमको कलेक्टिव बिलोंगिंग्स लाने में मजबूर करती थी, और हम लोग साथ में आए थे इन्हीं सारी चीजों के कारण. Which was the result that Hindu, Muslim, Sikh, Isai, all of them came together for fighting for one cause, that was bringing freedom to India. So that was one particular thing which we had to study. And with this particular video, we are ending the chapter here. So I hope you have understood a lot of things out of this chapter, and then it was a really good time for me also to teach you all of these things. Do let me know in the comment section if something is going wrong, or if you want something more from my end. I'll be more than happy to help you. So thank you so much. This is Ritesh Chandekar signing off until we meet next time. Thank you and have a good time.